हेलो फ्रेंड्स, आज लीगल स्टडीज की जो सीरीज हमने शुरू की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें हमने दो चैप्टर कर लिया था, जुडिशरी और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। आज मैं आपके सामने थर्ड चैप्टर जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। So let's start with the two marker questions. So first is define a contract as per the Indian Contract Act 1872. So you know what is contract? Contract when two person who is more than 18 years are coming with some common purpose with the consideration. Consideration. I think everyone knows what is meaning of consideration. Means something in return. Something in return. It means when two person who is more than 18 years are coming together in term and conditions with a certain consideration is called a contract. So agreement, what is agreement? Agreement is just a verbal form of acceptance of particular thing. Means I am offering something, suppose I am offering something and someone is accepting, then it is called agreement. It means agreement just a verbal acceptance of particular offer. So you have to understand, because this type of question can be asked, what is the difference between agreement and contract. So what is consideration? I have already told you, consideration means something in return. मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा कि अगर दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, तो अगर एक पर्सन, मान लो कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं, तो उस कार बेचने के बदले में मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिलना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. What is free consent? Free consent means there should be no coercion, no pressure, no any type of force, or no misinterpretation of anything about doing when we are pursuing or doing any contract. So it means when person is doing by their own choice, own will, then it is called the free will or the free consent. कंसेंट मीन्स आपकी मर्जी, तो आप अपनी मर्जी से करो, आपके साथ कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत तरीके से आपको बरगला करके या धोखा देकर के चीजें कॉन्ट्रैक्ट ना कराई जाए, दैट इज नोन एज द फ्री कंसेंट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच डजंट एग्जिस्ट. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. जैसे कि सपोज करो किसी ने किसी अंडर एज लड़की के साथ शादी कर ली जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो इट मीन्स इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इट डजंट इवन एग्जिस्ट इन लॉ. तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट डजंट एग्जिस्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. तो these are the basic definition based question they can ask in your exam and it is very tricky, so be prepared. See my video again. So 3 marker questions. Essentials for the element of valid contract. एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल्स हैं? तो पहली चीज 18 साल से प्लस दोनों लोग की उम्र जो है 18 प्लस होनी चाहिए, और प्रॉपर कंसिडरेशन होना चाहिए. ये नहीं कि मैंने अपनी कार बेची, आपने मुझे 5 रुपए दे दिए, नहीं. देयर शुड बी द लॉफुल कंसिडरेशन. जो लॉ के हिसाब से जो मिनिमम वेज है, जो मिनिमम एक्सचेंज ऑफर्स है, वो होना ही चाहिए. उसके बिना आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. विलफुल कंसेंट होना चाहिए, मतलब मेरी मर्जी होनी चाहिए, विलफुल कंसेंट होना चाहिए. देयर शुड बी नो फोर्स, नो कोहर्जन, नो एक्सटर्नल कंट्रोल, तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है. So next question, distinguish between void and voidable contract. void contract मैंने आपको अभी बताया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और voidable contract मतलब कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो हमारे साथ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, फ्रॉड हो गया. तो जो फ्रॉड हो गया, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब हमें वो चीजें लगती थी कि इट इज फाइन, टोटली फाइन, बट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद से हमें पता चला कि इट वॉज फ्रॉड. लाइक किसी आदमी की शादी हुई है बट एक किसी दूसरी औरत के साथ वो शादी करता है, और बाद में पता चलता है उस औरत को कि वो उस आदमी की फिर से पहले से शादी हो रखी है. दैट इज व्हाट. So during that marriage it was a valid contract, but when this new fact was in this house, then it was considered as the voidable contract. Means voidable contract means when something is occurring because of misinterpretation or fraud. Next question is, what is offer and acceptance? Offer means when any person who is offering something, like I am holding my car, so I am offering something. When someone is accepting my offer, yes, मैं मान लो कि मैंने अपना कार बेचा 1 लाख रुपए का, किसी ने बोला हाँ जी मैं खरीद लूंगा, 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, तो इट मींस आई एम ऑफरिंग एंड समवन इज हु इज एक्सेप्टिंग दिस ऑफर इज नोन एज द एक्सेप्टेंस. एंड बोथ व्हेन मैंने आपको यहां बताया था, व्हेन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इट इज नोन एज द एग्रीमेंट, एंड व्हेन एग्रीमेंट टर्न इनटू द पेपर, दैट इज नोन एज द contract. I hope these concepts are clear. Next is explain the concept of capacity of contract.
कि किसकी कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट में आने की, कौन आ सकता है। तो पहली चीज, एक अडल्ट पर्सन होना चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, और कोई ऐसी कंट्री का पर्सन जिसको हमारी गवर्नमेंट ने एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया, वो पर्सन हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वही है जिसका माइंडफुल कंसिडरेशन हो, या फिर माइंडफुल कंसेंट हो, या फिर वो दिमाग से पैदल ना हो, तो ये वैसा ही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। अदरवाइज a person who is declared by the government of India as an enemy country, that person cannot be coming to the contract with the Indian person. So what are the different type of contract? Contract कई तरीके के होते हैं. It can be business contract, it can be the family contract, it can be different type of contract. So you can answer here. So these type of questions is just for your practice and recall your basic concepts. But the type of questions asked in the exam is case based question. So let's see the case based question. I have found you from 10 questions from this chapter. So Amit owned a car and offered to sell it to Bharat for 2 lakh rupees. Bharat agreed to buy this car at the same price and communicate his acceptance clearly to Amit. However, before completing the transactions, Amit refused to sell the car, stating that he received a better offer from someone else. Then, what is the question? Is there is a valid contract between the Amit and Bharat? No, it was just a agreement, and agreement is not a valid contract. Agreement cannot be a valid contract. Agreement is just a acceptance, offer and acceptance, so it is not a valid contract. Identify the element of contract present in this case. It is not even a contract, it is a agreement. So please remember, don't confuse with the agreement and contract. These are the two different terminology in the law of contract. Next question is free consent or coercion. Ramesh threatened Suresh with the serious consequences if he does not sign a contract to sell his land at the very low price. देखो क्या कर रहा है यहाँ जी, याद रखना यहाँ पे थ्रेट कर रहा है, रमेश थ्रेट कर रहा है कि तूने अगर मेरी अपनी जमीन मुझे सस्ते दाम पे नहीं बेची तो। ड्यू टू द फियर सुरेश साइन एग्रीमेंट. लेटर सुरेश अप्रोच टू द कोर्ट टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द कोर्ट. What issues is involved? It means it is the forceful तरीके से क्या कर रहा है रमेश, सुरेश को फोर्स कर रहा है. तो फोर्सफुल थिंग्स कैन नॉट बी कमिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. इज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? नो, नॉट एट ऑल. वाइड और वाइडेबल? गिव द रीजन. नो, इट इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट because it is done by the forceful, and forceful thing is not even existing as a contract, so it is a wide contract. Please remember. Next question, capacity of contract is the minor based question. Rahul, who is a 17-year-old, please mind, such type of question is very tricky. Please always listen this age 17 year. तो हमें ऑलरेडी पता है, अगर ये क्वेश्चन देखने का कोई मतलब ही नहीं है कि कोई 17 साल का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता. तो सिंपल क्वेश्चन, इज द एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ? नॉट एट ऑल, नहीं हो सकता. स्टेट द लीगल रूल एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन. तो एक बार केस देख लेते हैं क्या है. एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द शॉपकीपर टू परचेज एन एक्सपेंसिव मोबाइल फोन ऑन क्रेडिट. After receiving the phone, Rahul refused to the market make the payment, claiming that he is a minor and not legally bound to the agreement. Obviously, he is not legally liable for this agreement, but there can be the economic consequences or the legal consequences can be taken against the parents or the legal hire who is under the control of the child. So yes, child is not directly related with this contract, but again there can be the legal consequences of that such type of acts, because fraud and misinterpretation is not tolerable. Even juvenile justice act can be used here. Next case is a promise to give a promise to B give the 10,000 as a gift without asking for anything in return. B accept the promise and later demand of money from A quote when the A refused to pay. तो क्या जी बताइए क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. प्लीज ध्यान रखना, विदाउट, अगर बिना कंसिडरेशन के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो गिफ्ट है, वो चैरिटी है, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. So please remember that if you are doing any contract without having any consideration, then it is a gift. So what does the role of consideration play in this case? So consideration ensure the valid contract. Without valid consideration it should not be real contract. So याद रखना, अगर आप consideration नहीं दे रहे हो तो आप गिफ्ट दे रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो. Is it clear? So moving to next question, is sell to the car to the B and claiming that the car is excellent conditions and has never been in accident. B discovered that the car has been involved in the major accident earlier. B filed the case against it. Yes, because this contract is voidable contract. क्योंकि जब हमने contract किया था तो हमें क्या पता था
तो हमें क्या पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज रियल, कि दो उसको लगा कि भाई हाँ ठीक है वो अपनी कार बेच रहा है, मैंने खरीद लिया, लेकिन मुझे बाद में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पता चल रहा है कि वो कार की पहली एक्सीडेंट हो चुकी थी जो उसको बताया नहीं गया था। तो यस, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना बच्चों, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। व्हाट रेमेडी टू बी दे? यस, देयर कैन बी द सिविल सूट, आप उसके खिलाफ सिविल सूट कर सकते हो, और दे यू कैन आस्क फॉर द डैमेज। यस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्डरली पर्सन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हिज केयरटेकर अंडर द प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस। देखो, अंडर प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। Believing that this caretaker will take care of him. Later, it's found that the caretaker misused his position. What type of issues involved here? Again, it is under the pressure. Under the pressure of thing is void contract. It is a void contract. The contract is valid? No, not at all, because it is used by the pressure and influence. Next is void agreement. A agreed to sell illegal goods to the B for the certain price. Later, B refused to pay A and approached to the court. Is this agreement is enforceable by court? Not at all, क्योंकि it is the void contract. void contract होगा तो जो हमने पढ़ा कि void contract क्या होता है, जो contract exist ही नहीं करता उसको void contract बोलते हैं। तो yes, this person cannot ask for that because it is a void contract. Next is A enter into agreement with the B to commit a fraud and share the profit. Later, dispute arises between them. Is the agreement is valid? Is the agreement is valid? No, because there is no lawful consideration and there is no lawful object. What element contract is missing here? Yes, there is the missing here is lawful consideration and object is missing in this case. And you know what is lawful consideration and object? Something in return, it should be lawful, and consideration also, and the object also should be lawful. Next is acceptance. A offered to sell a good to B via mail. B replies after a week accepting this offer, but this in the meantime A already withdrawn the offer. क्योंकि देखो A ने B को मेल किया एक कोई चीज बेचने के लिए, प्रपोजल देने के लिए, B ने एक हफ्ते बाद उसको मेल को देखा और उसको ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन तब तक वो ऑफर खत्म हो चुका था। इज दिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, बिकॉज व्हेन समवन इज, याद रखना बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन पीरियड टाइम का होता है। इट इज नॉट यू कैन से कि अनलिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एक सर्टेन टाइम, लिमिटेड टाइम पीरियड का होगा। तो इसीलिए इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वाज जस्ट फॉर द 1 week और इट माइट बी 2, 3 or 5 days or the festive season sale. So explain the rule of acceptance applicable here. Obviously there should be the time period. Time is very important in the contract. तो जब तक कोई टाइम पीरियड बाउंड होना चाहिए कोई कॉन्ट्रैक्ट को, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज इट इज अ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। Next question and last question of this chapter is intentions to create a legal relations. Two friends agreed to go on the trip and share the expenses equally. Later, one friend refused to pay his share and other approached to the court. Is the valid contract? अरे ये तो हमारे दोस्तों में बहुत होता है, हमने गए, एक ने खर्चा किया, दूसरे ने पैसे नहीं दिए, बट येस इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा कि दो दोस्त गए साथ में, बाद में एक ने मना कर दिया, तो इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। बिकॉज जो पर्सन का इंटेंशन, क्योंकि हमने वो बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस पढ़ा था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला था कि हाँ जी मैं आपको महीने के $500 भेजूंगा, बट बाद में जब 1-2 महीने के पैसे देने के बाद उसने मना कर दिया कि अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो कोर्ट ने क्या बोला कि इस बंदे की तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आने की कोई मनसा ही नहीं थी, इंटेंशन ही नहीं था, इसीलिए उसने आपको केवल वर्बली बोला है। तो अगर कोई चीज वर्बली बोली जाए देन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, यू कैन टेक द रेफरेंस हियर फ्रॉम द बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस। बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस याद रखना बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट केस। तो आई होप वी हैव समराइज्ड होल ऑफ द चैप्टर, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट all type of agreement, all type of contract, what is a valid contract, what is a voidable and void contract, and acceptance, offer, or the lapse of contract, or how can we discharge the contract. We have covered all the topic. So all the very best for your exam, and last, thank you.